नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज अगर हम टेस्ट मैच के दिन की बात करें तो रिजल्ट हम सबके सामने है, जो कि एज एक्सपेक्टेड था कि ये ड्रॉ की तरफ जाएगा कंसिडरिंग वेदर एंड एवरीथिंग। पर आज की जो एक सबसे बड़ी खबर है, जो इस मैच से भी बड़ी शायद खबर है, वो ये कि रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया, अनाउंस कर दिया। और इट वाज फ्रॉम cricketing fan perspective, cricketing fraternity perspective, it was a shocking news, shocking decision. But yes, as he was somewhere around 38, if I'm not wrong, so ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो आज नहीं तो कल शायद आनी थी। बट ये बीच सीरीज में आई है, ये एक शॉकिंग चीज़ है। और ये उससे भी शॉकिंग तब है जब आने वाले 2 टेस्ट मैच मेलबॉर्न और सिडनी में होने वाले हैं। और मेलबॉर्न और सिडनी की जो पिच है, वो रिलेटिवली स्पिनर फ्रेंडली पिच है। वहाँ पर अश्विन जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे। बट एनीवेज, इट्स हिज चॉइस, हिज डिसीजन। जैसा रोहित ने भी कहा कि ये एक बड़ा पर्सनल डिसीजन होते हैं सबके, और हर किसी को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उन्होंने बड़े प्रोमिनेंट तरीके से रोहित को, विराट को, अजिंक्य रहाणे को, चेतेश्वर पुजारा को उन्होंने थैंक्स दिया, बीसीसीआई को थैंक्स दिया, ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट को थैंक्स दिया। और उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी, एक बड़ी अच्छी जर्नी उन्होंने तय करी है। तो आज हम बात करेंगे मैच के क्विक रिव्यू पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच तो आज हो नहीं पाया। मैच में ऑस्ट्रेलियन इंटेंट के बारे में, जिस तरीके से वो मैच में आए थे कि हमें जल्दी से जल्दी 100 सवा 100 रन कंप्लीट करने हैं, फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमारे विकेट कितने भी गिरे, इट डजेंट मैटर, और भारत को बैटिंग के लिए बुलाना है। बट अनफॉर्चुनेटली इंद्र देवता को कुछ और ही मंजूर था। ना तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैच को ले जाना चाहते थे, ना भारत की तरफ। वो उन्होंने बीच में सीरीज को इक्वल कर दिया 1-1। सो यहाँ से अब आगे मेलबॉर्न और सिडनी, ये किस करवट ऊट बैठेगा, ये भी हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेवी, व्हाट्स योर टेक? आपका व्यू क्या है आज के मैच को लेके, आज के मैच के रिजल्ट को लेके, और जहाँ पे सीरीज अभी बैलेंस है, जहाँ पे स्टैंड कर रही है? पहले तो आपके शो को बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टुडे आज का जो डे था मेरे लिए थोड़ा सा इट वाज सरप्राइजिंग ऑन मल्टीपल लेवल्स। बट अगर आप द प्ले देखें तो मुझे व्हाट आई वाज हैप्पी टू सी इज के हमने कुछ 15 रन बनाए पहले तो, राइट, दैट वाज गुड। वी प्लेड 3 or 4 overs, गुड ओवर्स, दैट वाज अ बिग प्लस। दूसरा, उन्होंने जो मेन डैमेज जो था वो इंडियन बैट्समैन जो टेल एंडर्स ने कल कर दिया था। तो साइकोलॉजिकली ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी बोल दिया था वी वर डेस्परेट। उनके कोच ने भी बोला है दे हैड मेड अ डेस्परेट अटेम्प्ट। जैसे मैंने कल बताया था 20 ओवर्स, इट्स नॉट इजी, इट्स टफ ऑन द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, बट दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। एंड आज वो जब आए तो उनका जो मेन थीम था तो जल्दी से जल्दी वो आखिरी विकेट लेना, उन्होंने ले लिया 4-5 ओवर डाल के। दैट वाज अ गुड आउटकम फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट जिस तरह से फिर वो जब बैटिंग को आए, पर हमने जो देखा इज दैट दे वर नर्वस। और आपने देखा जिस तरह से वो उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक इट वाज अ बिग सेटबैक फॉर देयर कॉन्फिडेंस। क्योंकि बैटिंग जब टीम जाती है एक मैदान पे और जब उनके विकेट इतनी जल्दी जल्दी गिरते हैं और उनका जो एम होता है टू, जैसे आपने कहा अबाउट 150 रन, मतलब अच्छे पेस पे करना और सब अपने बॉलर्स को ज्यादा से ज्यादा ओवर्स देना सो दैट दे कैन गेट द ऑपोजिशन आउट, वो हो नहीं पाया। तो मुझे लगा कि इंडिया जो बैकफुट पे था, उनको उनके लिए उनका हौसला अब और बढ़ गया टू सी दैट उन्होंने इतने जल्दी विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे डाला। तो मेरे लिए लगा कि ये काफी एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज दैट दे विल टेक इनटू द नेक्स्ट गेम। क्रिकेट इज ऑल अबाउट अ मेंटल गेम। तो आई थिंक इट वाज अ गुड आउटकम। और जब हमारा एक भी विकेट नहीं गया, हम 8 पे 9 लॉस थे, वो भी एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। If you look at those scheme of things, yes, the rain had played a big part, but that's how the game goes. हमने कितने ऐसे रिजल्ट देखे हैं जो इंडिया
के अगेंस्ट गया हुआ है जब हम रिजल्ट नहीं ले पाए क्योंकि रेन हैज इंटरवीन्ड। तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, वी जस्ट हैव टू टेक इट। और आई थिंक जो डे वन का जो आपका प्रिडिक्शन था कि एक आध गेम, यू आर द ओनली वन हु हैव प्रेडिक्टेड एक आध गेम शायद ड्रॉ हो जाएगा, दैट हैज कम टू फ्रूएशन। तो गुड, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रेडिक्शन। तो yeah, that's my summary of the game itself. We will talk about Ashwin a bit later, but just the play, that's my view. Absolutely. So Anoop, if I ask the same question to you, what's your thought on the overall game situation where the series is standing at the moment? तो अगर आप गेम के बारे में देखोगे तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया केम विद द इंटेंट ऑफ actually getting quick runs, right? So obviously when you go for quick runs, there is always a chance of losing wickets. And also we have to remember, right? It's a fifth day wicket, right? Which has had a lot of rain. It's been a stop and start. It's been sunny sometimes. It's been a lot of rain. So there'll be a lot of moisture. There'll be a lot of, hold on the wicket, which means that anyone who plays on the fifth day always has the disadvantage, right? That is why जब आप initially जब मैच स्टार्ट करते हो तो until the pitch has got something like an England pitch or something like that जिसमें swing या ये साउथ अफ्रीका के पिचेस जहां पे आपकी सीम मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है तभी आप बॉलिंग सेलेक्ट करते हो. दैट इज व्हाई मोस्ट इंटरनेशनल कैप्टन्स always opt to bat first. It is not कि batting first is the easier option. It is because generally कोई भी pitch आप ले लो, fifth day wicket will always have some or other challenge. So batting last on that pitch would be difficult. So Australia's approach was obviously to get as many quick runs, which also meant that they lost a lot of wickets. To be honest, the match was actually ruled by rain, right? Honestly, I would say India managed to get out of jail because of the fact of the rains. But you also need to appreciate the fact that they really played well yesterday to get it to the point by which you could have the last two batsmen avoid the follow-on, right? Right. Indian top order was an absolute flop. But Rahul आप ले लो या तो आप Jadeja ले लो. Or then towards the end, Akashdeep and Bumrah, they showed that, there is that fight that is there in the Indian team to somehow hold on to it. Because the advantage that Indra Devta and rain gave us, अगर आपको वो scenario में अगर आपने properly use नहीं किया, तो honestly you would have ended up losing this test match, right? So India had the the advantage of rain coming and helping them, but they helped themselves by playing pretty well yesterday to ensure that they reached the point where you avoid the follow on, which meant that Australia had to bat, right? There is no choice here, right? I mean, Australia had to bat, they had to get some runs, and hence I would say that at the end of this test, who would feel more happy? I would say actually India would feel a lot more happy than Australia because of the fact that Australia actually left out a chance to win a game, and also the fact that they have lost out on Hazelwood, right? Even though it was all expected that it was expected that Scott Boland will anyway play at Melbourne because उनका record वहाँ पे बहुत ही बेहतर है. So it was always expected that Scott Boland will play the game, irrespective whether he replaces Hazelwood or Mitchell Starc, depending on bowling loads. But also the fact that both Mitchell Starc and Pat Cummins had to bowl almost the whole of the fourth day. The fact that Mitch Marsh is not bowling very much, despite Pat Cummins saying that he's not needing to be used, but it's always a challenge when your all-rounder isn't bowling very much. So all in all, I would say that who would be the happier person at the end of this test match? I would say it is India, not because they played very well, but the fact that they actually managed to get out of this tricky situation and going to Melbourne at 1-1, it is actually far more advantage India because Melbourne and Sydney will offer a lot more happiness to the Indian fraternity from a playing perspective. Absolutely. But that news was actually counterfeited by the fact that Ravichandran Ashwin decided to call it a day, which we'll talk probably during the show. But that news, the fact that happiness was a bit hit by the fact that there'll be no Ashwin in Sydney, which is a lot more of a spinning track than Melbourne is. So you will not have the best spinner not playing in Sydney. So that is a big news. But all in all, a mixed day for both teams in the sense from a cricketing perspective. Yes, important just to extend Anoop's very important point he made, and I completely agree with him. That look, India batting top order did not do well at all. It was very disappointing. However,
the lower order got out of jail card, right? They gave India that, and we were very fortunate for that to happen. So a big thank you to Akashdeep and Bumrah for that last wicket partnership. But playing the devil's advocate, right? Putting on the Aussie hat, if we had lost that wicket, we would have been in Australia's position next day of could have lost like 89 for 8 wickets down, and we would be in a very big spot of bother, right? And that is absolute fact, and we must call it out that we literally dodged a bullet, as they say in English. We literally dodged a bullet, and but let me also add one last thing in such a long series when these top two cricketing giants are playing. कभी कभी क्या होता है ना कि आपको इस तरह का ब्रेक चाहिए, राइट? कि आपको you need this kind of a break to take your game along and get a new impetus आपके गेम में लाने के लिए. मुझे ये लग रहा है कि ये जो जो गेट आउट ऑफ जेल निकले ना, जमानत हुई उनकी, मुझे लग रहा है कि ये इंडिया को ये सीरीज जिताने में बड़ा मदद करेगा. और आई एम प्रिडिक्टिंग दैट in Melbourne and in Sydney, which is India-friendly kind of wickets, the crowd will be it'll be like playing in India, right? They're like playing in Ahmedabad or what do you call Mumbai or whatever. So crowd will be behind. Indians are more familiar with those grounds. The India gets charged up with the crowds. It is perfectly set for India now, and all the big wigs, just like Rohit and Rohit and Kohli to come good. Okay? I think the stage is now set, in my opinion, that it will be a cracker of a game. Australia also will try their best, but I think India will be on the ascendancy just because of the just the momentum they have gathered. तो मुझे ये ऐड करना था. Thank you. राइट. और कहते हैं ना कि एक भाग्य भी बहादुर का साथ देता है. तो कल जो बहादुरी भारत ने दिखाई, फिर भले ही भारत के लास्ट विकेट ने दिखाई, तो इस वजह से शायद आज भाग्य का सहारा भी, भाग्य का साथ भी उनको मिला. अब इसमें एक और चीज मुझे याद आती है कि ऐसी ही सिचुएशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2012 के आसपास हुई थी, जब महेंद्र सिंह धोनी साइड को लीड करते हुए ऑस्ट्रेलिया आए थे और उन्होंने 2 टेस्ट मैच के बाद में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था. और उसके बाद में विराट कोहली ने कैप्टनसी टेक ओवर करी, और जो बाद के जो 2 टेस्ट मैच थे उसके अंदर उन्होंने एक सेंचुरी, डबल सेंचुरी भी लगाई और ड्रॉ भी किया. वो बड़ा एक अच्छे टेस्ट मैच हुए थे. तो वैसे ही शायद मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि एनीथिंग विच हैपन फॉर अ रीजन. तो शायद ये भी अश्विन का जो रिटायरमेंट अनाउंस करना, ये भी किसी न किसी एक रीजन के लिए हुआ होगा. प्रोबेबली हो सकता है कि इससे जो मेलबर्न और सिडनी में जो टीम का कॉम्बिनेशन जो बैठे, वो शायद थोड़ा सा और फिट बैठ सकता है कि सुंदर और जडेजा ये दोनों एक साथ खेल सकते हैं. तो शायद बैटिंग को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी और बॉलिंग भी थोड़ी स्ट्रांग होगी. हो सकता है हमें ऐसा भी देखने को मिले कि सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखे. प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है. सो कमिंग बैक टू दी हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ द डे, अनूप, मैं आपके साथ आऊंगा. जो रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट, कि पहला रिएक्शन आपका क्या था? Actually, pretty shocking. मैंने casually, I was just checking and I just saw the message saying that R. Ashwin retires, and I don't look at any other website. I usually look at proper cricketing portals. So I was 100% sure the news was correct, and it was shocking, to be honest, because it was definitely not expected in the sense. I mean, there wasn't even a sort of inclination outside of the internal team fraternity that he's actually planning to retire at the end of this test. From whatever we heard from Rohit, right, it seemed that in Perth itself he expressed a desire, and Rohit asked him to stick back. But अगर आपने press conference देखा, तो you would have noticed a couple of points. I think this is the feeling we are getting, right? Nobody knows what happens internally, so please take it with a pinch of salt, as they call it in English. मुझे ऐसा लगता है कि शायद it has been sounded out to him that probably he's not going to get the opportunity, or
there is very less chances for him to like get any more opportunity. और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इस सीरीज खत्म होने के बाद India does not play a single test to the best of my knowledge until they go to England in the next year, which means Ashwin would be around 39 years old at that point of time, right? So in short, I think there has definitely been a sound out given to him, and that is the feeling you got from Rohit's presser, right? When he mentioned that sort of thing, like we've had a chat. Sort of उन्होंने directly तो नहीं बताया कि भाई हमने ऐसा directly बताया, but in the sense it had the feeling that. So I think probably maybe he was sounded out कि उनको opportunity मिलने का chances कम है. And Ashwin is a very smart cricketer, mate. I mean, we can talk about his records, which I would love to talk about. But honestly, I think Ashwin is a very smart cricketer. उनको जब लगा कि भाई यहाँ पे हमें opportunity नहीं मिलने वाली है, तो pretty much like Mahendra Singh Dhoni या कोई और cricketer ले लो, right? I remember even Wriddhiman Saha said this, right? When Rahul Dravid spoke to him and said that आपको chance मिलना impossible है इस team में. So he said, I'm not going to play Ranji cricket, right? Why? Because, like I will be blocking a youngster from getting an opportunity to play for India, right? So I think Ashwin must have thought, anyway, I'm not going to get the opportunity. There is nothing for him to prove left. So, like this is a good time to go out. And I think he's made the decision. And I think, like Rohit said, and I always believe this, like as a cricketer, you should make the decision. Like I've always felt this, like आप तभी जाओ जब लोग पूछते हैं कि आप जा क्यों रहे हो, राइट? अगर आप देखोगे तो सुनील गावस्कर ने 10,000 रन बनाया था एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही रिटायर्ड, राइट? मुझे तभी भी याद है, तब मैं बहुत छोटा था. आई यूज्ड टू थिंक यार ऐसा क्यों, व्हाई वुड ही रिटायर नाउ, लाइक व्हाई कांट ही प्ले फॉर सम मोर इयर्स, लाइक ये क्या सेल्फिश है क्या वो कि वो 10,000 रन मेरे पास हो गया. लेकिन अगर आप सोचोगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी थॉट why is Sunil Gavaskar retiring, right? Arey, he should have played for some more time. So that is the kind of retirement you need to have, and I think Ashwin's made the right call, because anyway he was not playing one day or T20 cricket for India. He was only playing test cricket only in India as well, right? Because जैसे आप foreign condition में आते हो तो Ravindra Jadeja was preferred, and with like Washington Sundar coming into the mix as well, now you have like Sundar as well, like coming into the mix, right? Which means you're going to get that ability. The chances of Ashwin playing are very very slim. So अगर आप सिर्फ रिटायरमेंट की जगह पे पूछोगे तो कीपिंग ऑल द इमोशंस असाइड, ही इज आल्सो माय तमिलनाडु प्लेयर एज वेल, सो देयर इज आल्सो द तमिल कनेक्शन देयर. Like I think it's a very good decision, irrespective of which way it pans out, and it's a good call by Ashwin. I think we should spend some time talking about those amazing records, which is absolutely. We will do that. I'll go with same question with Levi, with one more addition. Then we will talk about his record also. लेवी, जैसा भी अनूप से मैंने पूछा कि उनके क्या उनका रिएक्शन था, पर अगर मैं आपके साथ में इसके साथ में एक और क्वेश्चन ऐड करूं कि लगभग यहाँ से ईयर और ईयर एंड हाफ का समय हम लोग अगर और ऐड कर लें तो हमें रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और भी एक दो प्लेयर हमारे टीम में है जो जाते, विराट कोहली, तो वो भी हमें पॉसिबिलिटी है कि 1.5 या मैक्सिमम 2 सालों में ये बैच भी जा सकता है या रिटायर हो सकता है. तो एक बहुत बड़ा वॉइड भी क्रिएट होगा और प्लस ये एक बहुत बड़ा चांस भी होगा यंगस्टर्स के लिए कि वो आए और इस वॉइड को फिल करें. सो ये एक ट्रांजिशन पीरियड आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं अश्विन की बात करूंगा, फिर मैं वो ट्रांजिशन की बात करूंगा. आई थिंक अश्विन का look, yes, first of all, I would like to thank him on behalf of our fraternity of serving Indian cricket with distinction. Retiring as the second highest wicket taker after Anil Kumble is a magnificent achievement, and he has made India proud, and he has taken Indian cricket when he came to where he has left it in very, very good position. So thank you to him. Secondly, it is his decision, and as Anoop said, we respect that. However, my personal opinion is that mid-series, I don't believe it is in the team's interest to announce a retirement, right? It could have very well been in the last test, because you are a unit. And also you keep the opposition confused
by not revealing if one is completely out of the picture, they can change their game plan. And it is really important to keep the opposition always guessing. It's really important. And I believe so. इसीलिए मुझे लग रहा है कि अश्विन का डिसीजन सराहों पर ठीक है, बट मैं होता तो मैं उसको डिले करता। और ठीक है, आपको चांस नहीं मिला। अब जैसे आपकी तीर में जो कमान में तीर होते हैं, जो अलग अलग मैचेस के लिए जो आप बेस्ट आपके 11 होता है, उसको आप डालते, उसमें शायद अश्विन नहीं फिट बैठता है, इट्स परफेक्टली फाइन, यू नो, उनको चांस मिलता है। बट ठीक है, इट्स ओके इफ he felt that he might that's his and his decision, but I don't think he should have waited till Sydney, to be very honest. अच्छा, coming back to the void, आपने कहा, मुझे तो I am so very heartened by the bench strength of India. शायद ही कोई कंट्री होगा जिसके पास इतना बड़ा बेंच स्ट्रेंथ है that they can pick and choose and they have all the lever, जैसे हमने बात किया था पहले, कि उनको प्लेयर्स को जिनके पास पोटेंशियल है उनको बोलो कि भाई यू आर गोइंग टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, वी विल गिव यू ऑल द फैसिलिटीज, all the security, financial security and otherwise, to play only test cricket because we see you, because you have the temperament, and just like a cheetah, your only job is to run. So you just focus on that, we will give you all the facilities, and that's how you make a world class winning team, right? And so you are enabler. I think Indian cricket team should start in the process. We already have a good strength, like jaise ki we have got Rituraj Gaikwad, Rash, Riyas Iyer. These are the new teams thing you have to get into the Indian team in the going forward. Give them chances, give them as much exposure, and play and mix around, so to get them blooded in, so to speak. तो मुझे लग रहा है कि जितना हमारे bowling strength है, batting strength है, I think we are in a good place. All that the Indian cricket requires is a roadmap, a plan. Okay, over the next 1.5 years, how you're going to blood these youngsters. You know, these are like raring to go. These are all like Ferrari engine. They are just waiting to go. Just enable them and get them on the right track. So that's my view. Right. सो अनूप, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं अरुण जी, वो कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो पहले उनके क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। राइट, सो अरुण जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा इज नेक्स्ट आफ्टर दिस सीरीज एंड विराट कोहली आफ्टर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओके, आर अश्विन नॉट एक्सपेक्टेड, ही स्टिल हैड ऑलमोस्ट 2-3 years। यस, बिल्कुल अरुण जी, आर अश्विन खेल सकते थे। तो जैसा उन्होंने बोला कि ही स्टिल हैव, जैसा उन्होंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि आई स्टिल हैव सम पंच इन मी, सो दैट इज समथिंग व्हिच आई विल यूज और टेक आउट इन दी क्लब क्रिकेट। तो वो जो आईपीएल खेलेंगे तो उसके अंदर जो उनकी क्रिकेटिंग की भूख है वो आईपीएल में निकालेंगे। पर जैसा अभी अनूप ने भी कहा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे उनको अभी चांसेस मिलना थोड़े से एक ग्रे एरिया था, तो वो शायद टीम मैनेजमेंट ने उनको कन्वे किया होगा। और एनीवेज ही इज 38, तो उन्होंने सारी कॉम्बिनेशन को सोच के शायद ये डिसीजन लिया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरा एनालिसिस है। नेक्स्ट, और ये कहते हैं अरुण जी कि राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, विवेक लक्ष्मण, वीरेन ऑलमोस्ट रिटायर्ड विद इन 1 year। एग्जैक्टली यही चीज हम लोग अभी बात कर रहे थे। करेक्ट। अगर राहुल, मैं अगर आपको एतराज नहीं तो मैं इनके लिए ये सवाल का जवाब देना चाहूंगा। अरुण जी ने एकदम परफेक्ट बताया कि राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, लक्ष्मण और वीरू ने ऑलमोस्ट रिटायर विद इन 1 year, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग बिफोर आपको वही सिनारियो अब वाले सिनारियो में होगा। जैसे अश्विन ने कहा ना, वी आर a few left OGs, OG meaning old and group. So essentially the other 2 left OGs are obviously Rohit Sharma, 3, I'm sorry, not 2, Rohit Sharma, Ravindra Singh Jadeja and Virat Kohli, right? Of all the 3, both Jadeja and Rohit are more on the age side, and Virat still has age on his side. So definitely Indian cricket will go through another major transition, and I think it is important that आपने 1 साल का प्लान बताया, 1-1.5 साल का, आई थिंक आपने या लेवी ने, आई एम नॉट एबल टू क्विकली रिकलेक्ट, बट आई थिंक यू हैव टू पुट अप अ 5-year plan to say how are you going to develop Indian cricket from here for the next 5 years. Who is your future captain and vice captain, because Rohit Sharma is not going to be your captain
probably even if he does continue, I think the England series might be the last straw. But I suspect that he might also either retire or like at least give up captaincy. So you have to identify your next captain, vice captain, and a lot of things that's going to come. So interesting times are ahead. और अरुण जी ने भी वही बात बताई जो लेवी जी ने बताई, right, कि अपना bench strength is very very strong, which is 100% correct. So 100%, like good chance that you're going to get some new players. But the question is, whether Absolutely. India is ready to take the hard decisions. Are you ready to हाँ, take the hard decision on a Rohit Sharma exactly. or Virat Kohli? Because it's very easy to make Ashwin kind of decisions. Because sadly, अगर मैं आपको बताऊं तो Indian cricket and most world cricket don't give the same weightage to a bowler as much as they give to a batsman. When Tim Batsman. Southey retires, or when Brett Lee retires, you facilitate them, but आप उतने माहिना नहीं देते हो जितना आप एक बैट्समैन जब रिटायर होता है, एक सचिन तेंदुलकर रिटायर होता है तो, या तो एक एबी डिविलियर्स रिटायर होते हैं तो देते हो आप. But at the end Right. of the day, it is far easier for the Indian cricket management to give a tap on the shoulder to someone like Ashwin. But it's going to be very difficult to give a tap on the shoulder to someone like a Virat Kohli or a Rohit Sharma to say, hey, guys. But I think they are the smart people. I think Rohit and Virat will make the decision very, very soon. Definitely Rohit will make the decision, is my view. And Jadeja also, I think probably we are seeing the last of him in this series. I think this might be probably his last series. Or max to max, he might stick around for England. But usse zyada, I don't think Jadeja will stick around as well. राइट, एब्सोल्युटली. और अनूप, जो आपने एक बात कही थी कि एक सही टाइम पे रिटायरमेंट लेना, वो ऐसा है कि आप जब रिटायरमेंट ले रहे हो तो वो पूछते कि भाई आप क्यों रिटायरमेंट ले रहे हो. आई रिमेंबर कि जितने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होते हैं वो भी ऐसे टाइम पे रिटायरमेंट लेते हैं जब वो एकदम उनके पीक पे होते हैं, जब उनमें उनके अंदर उनका बेस्ट वो निकल रहा होता है, उस समय वो रिटायरमेंट ले लेते हैं. तो ऐसे कई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हमें उंगलियों पर मिल जाएंगे जो कि होंगे, और फिर उनके रिटायरमेंट लेने के बाद वाकई में लगता है यार ये तो अभी भी आराम से 3-4 साल खेल सकता. अगर भारत में होता तो 5 साल खेल जाता. सो हम अपने सुपरस्टार्स को जाने नहीं कहाँ देते हैं सर. हम हमारे सुपरस्टार्स को ना सुपरस्टार बना के उनको चांद तारे पे चढ़ा देते हैं, अगर मैं हिंदी में राइट कहूँ राइट. तो. अनूप, आप कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे अश्विन के. सो ये स्टेज. बहुत ही एक मायना रखता है. तो आई वुड लाइक टू शेयर, आई मीन अश्विन के बारे में लाइक इट वर्ड्स इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस किस टाइप के प्लेयर हैं. अगर मुझे आप पूछोगे कि भाई अश्विन के ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं जो आपको क्विकली याद आते हैं, राइट, विदाउट लुकिंग एट too much of data. The moment that I remember the most of Ashwin is the fact that he actually loved playing cricket. ऐसे कितने प्लेयर हैं जो एक टेस्ट मैच सीरीज खत्म करने के बाद जाके TNPL में जाके खेलते हैं. He actually played for the local Kowai league, which is like as good as आप कह सकते हो for an international cricketer, that is like playing club zero level cricket. But Ashwin ka biggest advantage that you can quickly remember is his love for playing the game and his love to constantly innovate, right? He always looked on how he can learn and like how can he become better and better, right? उनकी action वो change करते थे, वो हर time जाके कुछ नया चीज figure out करते थे. कैरम बॉल लेके आया उन्होंने. He keeps innovating and trying to make a difference to his own game. Records wise, like there are some very big numbers that we need to talk about because he has got some amazing records. I think Levy ji ने already बताया. उसके अलावा I will share you a few of them just for all of us, Yes. to think about. He has the second highest 5-wicket hauls in Test cricket, 37, including shade ball. उनके अगर आप arguably this best moment from a bowling perspective आप देखोगे तो it was that 2016 series. I think इंदौर में उन्होंने almost एक ही मैच में I think 13 plus wickets लिया था. और वो series I think it was against South Africa. I think I'm not able to get the right team, opposition team, but he actually got some 27 wickets in that series. That was his most memorable kind of bowling moment. But मेरे लिए उनका सबसे memorable bowling और batting moment is that 2022 World Cup, T20 World Cup, जहाँ पे उन्होंने he showed his street smartness, right? उन्होंने वो wide निकालने के लिए उन्होंने थोड़ा move करके he allowed the bowler to bowl the ball wide, which meant you got one free run. And then like he was very calm, right? वो वाले moment में he stayed calm and he got that 4 to get India over the line, right? I mean Virat Kohli played
innings of their life. Okay, he and Hardik Pandya. No, nothing to take away from what they did, but all that would have gone for a waste had Ashwin not shown the street smartness. उसके अलावा जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आता है इज दैट 2021 सिडनी वाला टेस्ट जब विद अ कंप्लीट बैक प्रॉब्लम ही एंड हनुमा विहारी प्लेड ऑलमोस्ट वन फुल डे to actually help draw the test match and allowed you to go to GABA and do what you did at GABA. That was all possible because there was one certain Ashwin and certain Hanuma Vihari who actually played the whole day and kept Australia at bay. So ऐसा moments अगर आप मुझे पूछोगे तो these are the moments that you remember of Ashwin. Here I'm sure he has hundreds of other records that probably I might not be quoting, but these 5 moments come to your mind quickly about Ravichandran and Ashwin. अगर मैं बोलूँ तो I don't think there can be any player you are going to get like Ravichandran Ashwin for a long right, time. right. There's a huge void that you're going to be finding it difficult to fill in the Right, department. right. और इसके अंदर पता है अनूप मैं sorry Lee, I'm coming to you but just quickly want to add one point. अनूप मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन जो है ना वो एक बहुत अंडररेटेड ऑलराउंडर है. मतलब वो उनको कोई ऑलराउंडर कहता नहीं है या वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में शायद आते नहीं है जब होने पर उनका अगर आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों रिकॉर्ड देखें ना तो वो किसी ऑलराउंडर से कम नहीं है. सो वो आज इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनके 6 टेस्ट 100s हैं और वो भी उन्होंने बहुत अच्छी जगह बनाए, इंग्लैंड में बनाए हैं उन्होंने और जहां पर मतलब और सारे टफ सिचुएशंस में बनाया है उन्होंने. Exactly. He bailed out India in many matches, just like how Ravindra Singh Jadeja does in his batting, right? Bails out the country most of the times. वैसे ही Ashwin has done it many times. In fact, by the way, he's the last person to score 100 as well, as far as I remember. I don't think exactly. barring Virat Kohli, I don't think anyone has just got any 100 in first innings, right? I don't think anyone's got 100. Just like how Bumrah said, right? Like look at my batting. Like I still hold the world record for the highest amount of runs in one over, right? So it looks like where people just forget what Ashwin can do. It's a big void to be able to fill up. You're going to find it very difficult to find another Ravichandran Ashwin. Yes, you might find another off spinner, you might find another bowler from your domestic circuit, but to get the kind of street smartness, the kind of game awareness, it's going to be difficult. He's like the Bumrah of your spin bowling department, mate. You're going to find it very difficult to get another guy. Absolutely. Yes, Levi, you were saying something. All I wanted to say is thank you, Anoop ji, for sharing these stats. It was very heartening to hear these ones, and what a champion player. I mean, India seriously were very fortunate to have this kind of player. So again, thanks for sharing that. I just wanted to say that. And 6 centuries, true all-rounder. So kudos to him. Right. Rahul, so there was a lot of points. जी कह रहे हैं वही पूछ रहा मैं बोल रहा था कि अरुण जी ने काफी कुछ लिखा है. I can't see all his messages anymore, but maybe we may just want to like have a chat. Maybe all of us can just sure. अरुण जी के कुछ मैसेजेस हैं वो हम लोग ले लेते हैं जहाँ से हम लोगों ने लास्ट छोड़ा था. ये मैसेज था फिर कि IPL ये उन्होंने किया था. Levi, do you want to answer this one? IPL has made a great difference to lead a team. Yes, absolutely. IPL is the bedrock. IPL ने जो Indian cricketers के लिए किया है, it is like a shot in the arm. It is like a energy drink. It is the confidence, the level of exposure, the level of learning curve, more importantly, of the world, the top cream de la cream of the world cricketers to come intermingle and learn from each other, communicate with each other, right? It is the cross-pollination of the skills and knowledge. That is what Indian cricket has gained from this. And kudos to the BCCI for organizing such an event and creating such an amazing ecosystem where Indian cricket has flourished. All 3 formats, I think, and also kudos to the Ranji and the domestic cricket, which is the bedrock of the Indian cricket. And this has been a valuable outcome and the 3 different spheres. So I think absolutely right. Arun ji ne sahi kaha, IPL has made a big difference. Right. Thank you. So Anoop. Sure, I'll just read through this. An English player
said that the captain should come from local players, then it can make a difference in it. That's actually has happened. I think it's Kevin Peterson. Which is correct. अगर I'm assuming अरुण जी आप IPL को रख के बोल रहे हो. I am always for the fact that you should have a local captain. When I say local captain, it has to be an Indian captain. I have never liked the concept of a foreign captain because जब आप एक फॉरेन कैप्टन को लगाते हो तो दो प्रॉब्लम क्रिएट करते हो. बिकॉज आईपीएल की रूल्स ऐसी है कि आप 4 फॉरेन प्लेयर ही खेल सकते हो. तो आपने एक प्लेयर को लॉक ही कर दिया वहां पे, राइट? तो यू आर रेस्ट्रिक्टेड इन टीम कॉम्बिनेशन. अगर आप एंड इफ द कैप्टन, the foreign captain is not performing, then it puts you into a double problem, right? Now you can't drop him because he's the captain, and you can't, and you're also taking up an overseas player spot. So I'm never a fan of foreign captains. And ये अगर आप देखोगे तो it was very clearly felt when Ricky Ponting led Mumbai Indians and Rohit Sharma was at that time in the team, and like after playing about 4 or 5 matches when Ponting wasn't showing batting form, he actually led the captaincy and left the captaincy and became a coach. Now Australian players में ये होता है because that is how the culture here is. Rahul, Levy will agree with me. यहाँ पे players को ऐसा कोई हीरो नहीं बनाता है, ठीक है? Nobody makes them like the god of the world. Okay, यहाँ पे वो सब normal cricketers होते हैं. अगर if they find that they are not performing, they are clearly told in no uncertain terms that mate, it's time for you to move on. So I would strongly agree with Arunji's words here that you cannot have a foreign captain in IPL, irrespective which franchisee you are. I wouldn't advise any time a foreign captain at all. It should always be an Indian captain. Right. Sidhharth का भी कोई comment है जी? He also got neglected due to incompetent batting as less batting. I think ये अश्विन के बारे में कह रहे हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ सिद्धार्थ जी कि आप अश्विन के बारे में कह रहे हैं. एब्सोल्युटली एग्री सिद्धार्थ, आपने जो पॉइंट बताया परफेक्ट है वो. इंडियन बैटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमने अपने बैट्समैन को भगवान का दर्जा दे दिया ऑनेस्टली, एंड उसके वजह से वी डोंट स्टार्ट टू क्वेश्चन आवर बैटिंग टैलेंट फॉर एटलीस्ट फॉर द लास्ट 4 to 5 years. गाइस, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. जितना मुझे पता है इंडियन लोअर ऑर्डर, दैट इज रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, whoever plays in that lower order has constantly bailed India out, including Ashwin. And your bowlers whom you keep on asking them to do more than bowling, आप उनको बैटिंग करने को बोलते हो, आप उनको फील्डिंग करने को बोलते हो, सारा चीज आपको बॉलर से करवाना है, लेकिन आपके जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो बस अपने मर्जी पे रहते हैं. प्लस दे ऑल्सो टेक अनडिफिनिट ब्रेक्स, राइट? आई मीन आई नेवर अंडरस्टूड, बीच बीच में वो चले भी जाते हैं. तो ऑनेस्टली सिद्धार्थ जी ने जो कहा है, आई वुड 100% agree. Probably the fact that, as I told you, right, we don't value our bowlers as much as we value our batsmen, which means that anytime there is a problem, हम पहले bowler को काटते हैं before we actually go and ask our batsmen to go. Why would you? I mean, if you ask me, right, on present batting form, I think Ravindra Jadeja should be on your starting 11 as a batsman, right? I mean, probably like Shubman Gill, because Shubman Gill or Rohit Sharma or Virat Kohli drops off because of the fact that on present form, Ravindra Jadeja is probably a better batsman. Forget his bowling, right? I'm just saying as a batsman, he can definitely play, right? So right. That's the fact. Sidhharth is right. Absolutely. So Levi, this comment? Yeah. Ashwin is a genius cricket scientist. Absolutely. He is an kind of engineering brain, and he keeps thinking innovative how to make his bowling better, trying new techniques, trying different stop balls or different kind of balls that can actually make a difference in the game, and he can actually be a net contributor, outstanding contributor to the game. I mean, he's absolutely say that. But thank you for the comment, because that is exactly how his mind works, like an engineer, like a top-notch engineer who always thinks about how to improve the game, how to improve his bowling, what new he can, bowling he can add to his repertoire, right? Right. So absolutely, he's a genius and salute to him. Right. So one interesting question here is from Arunji. Anoop, maybe you would like to take it up? Sure, mate. Okay, R. Ashwin got neglected after Dravid left. R. Ashwin is a legend. I am not sure about after Dravid left, because Arunji, अगर आप देखोगे तो in the last quite some foreign series, I don't think Ashwin got too many chances, even when Dravid was the coach. India, obviously, with the spinning tracks, you would expect R. Ashwin to be playing almost every game. But foreign conditions, I think it is always Jadeja who was preferred.
And off late, because like Washington Sundar has come in and he's given you another option similar to Jadeja. And I don't think Rahul Dravid उस reason की वजह से वो neglected है. If you ask me, Ashwin has been neglected a lot in playing in foreign conditions. I think he's a good enough player to play in foreign conditions, but obviously the team management has a different perspective of it. And not wrong in the sense, right? Because Jadeja is definitely a better batsman, right? And as I told you, right, as you go low, if your top order is not performing, Rahul, so it all boils down to your top order, right? If your top order is not performing, then you will need a Jadeja, you will need, if I remember correct, right, Shardul Thakur in the last time, right? And now Washington Sundar, you will need players like them to be able to be there, because you want to give that cushion to the failing top order. So until India address the top order problem, I don't think you are going to have scenario where like people like Ashwin will get picked. Right. So here Sidhharth is also saying Jadeja average 50 plus in Australia. He can easily play as a batsman only. Right. Pretty much what I said. Levy, you want to add something to that one? Just a very brief point I want to add. Yes, look, it might seem that Ashwin was neglected, but be fair to the selectors as well. कि ऐसा होता है कि कोई pitches पे it is not feasible. You want to present the best bowling combination that will be effective on that pitch. I know it is again going against the grain, and because now he's retired. Yes, we all are emotional, but at the same time, I think if you look at the track record of India has been of recent the #1 test team for the longest time, or 1 and 2 for the longest time. That shows that someone is doing the right thing of picking the right teams to have a consistently high level of performance. We cannot negate that. We have to be fair. We have to be 100% fair. And I think all in all, I think the selectors have done a good job. You can't always, because of our good bench strength, we have got some good bowlers that have been given chances. So I think, well, we have to be a bit fair and not be too harsh on the selectors. That's what I think. Right. I think that's absolutely correct, Jo Levy ji ne bataya, right? Putting all emotions aside, right? Ravindra Jadeja is the better batsman. And until unless, as I told you, right, if you have a misfiring top order where you can't depend कि आपके जो top order है वो आपको consistently runs देंगे, तो आपको lower order को भरना ही पड़ेगा, right? When you have to fill up your lower order, तो आपको रविंद्र जडेजा जैसे player is a lot more better, because he's a left-hander, he's a far better batsman. Same for Washington Sundar, right? He's a better batsman than a better bowler. Ashwin के case में, he was a better bowler than a better batsman. So you are a bowling all-rounder, whereas Jadeja off late is a batting all-rounder, right? Which India needs. Even up to the reason for getting Steven Smith to open, right? आप India ही मत देखो, आप Australia ले लो. Why was Steven Smith promoted to open the innings, right? Because they wanted to get Mitch Marsh and Cameron Green in the squad, right? Two all-rounders. All that was the fact is because even Australia does not have a properly firing top order, right? Because they don't have a proper opening combination. Warner towards the end of his career wasn't the same Warner that he was, right? Khwaja hasn't been in the best of form, like the Khwaja who got a lot of runs and pushed himself to the squad. Labuschagne, correct me if I'm wrong, we all know has been having a horrid time, like Virat Kohli, he's been struggling. Steven Smith has had a horrible time, right? तो आपके टॉप 4 वहां पे भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. It's the same problem that India is facing, that you are seeing in Australia in a different perspective, because Australia is more space friendly. You are wanting a guy like Mitch Marsh and Cameron Green to play, which meant that you had to, I mean, irrespective whether Smith wanted to play or selectors told him let's keep that aside, you had to actually promote your best number 4 to open the innings, and which created all that problem. And now he's back to number 4, and now you've got an opener who's probably not an opener by himself in Sheffield Shield cricket to open. So ye sara problem, Rahul, comes from the fact that you have a misfiring top order, which is then forcing selectors to look at multi-format or multi-function players, people like Jadeja, people like Washington Sundar, to come into the picture and help out that misfiring top order. So just if you can get your top order firing properly, then it will be. अगर IPL में जो अगर आप देखोगे, they have that impact player rule, right?
उसके वजह से you don't need the role of that like half all rounder, right? Not the proper all rounder. Exactly. We're not Exactly. talking about an all rounder like Jack Callis or a Kapil Dev, right? We are talking about a half Exactly. all rounder, right? जो हाफ ऑर्डर को जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहां पे इम्पैक्ट प्लेयर आता है. अब टेस्ट क्रिकेट में ले लो तो कोई इम्पैक्ट प्लेयर तो नहीं होता है ना दोस्त, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा स्क्वाड. तो इसके वजह से बीट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, व्हेन यू हैव मिसफायरिंग टॉप ऑर्डर्स, यू विल बी फोर्स्ड टू पिक ऑल राउंडर्स हु कैन बैट मोर देन बोल. दैट्स वेयर इट बॉइल्स डाउन. एब्सोल्युटली राइट. सो सिद्धार्थ जी ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया है हम सबके लिए. सो थैंक यू सिद्धार्थ जी. तो यस, हमारा एक छोटा सा काम ये होता है कि हम लोग चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें, समझें और अपने अपने व्यूज शेयर करें विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और विद आवर ओन अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज हाउ वी यूजुअली डू. एंड एट द रिजल्ट अगर ये चीज़ें अच्छे से निकल के आती है तो ये बड़ी अच्छी बात है. अरुण जी का एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पर, हम उसको देखते हैं. Levi, you want to give that a shot? Levi? Acha, Rishabh Pant may be asked to change the batting attitude if he wants to stay in Test cricket. This was discussed by one of the greats. Rishabh Pant, because of his sheer talent and his ability to change the game, the opposition literally, if you ask any Australian, the one player that they would think they would rather see in the pavilion, they would name Rishabh Pant because he can change the game on the head, enough in a couple of overs. Right. Yeah. तो उसके लिए और इवन ही जैसे कि ये मैचेस, ये 2 मैचेस में वो जल्दी आउट हो गए हैं, इसलिए और हमारे जो टॉप ऑर्डर फायर नहीं किया, इंडिया को बहुत धक्का मिला है. वैसे ये बड़े स्टार प्लेयर्स हैं और अगर वो 1 या 2 भी खेल गए तो इंडिया will definitely would have done so well. It would have been, I would say 3-0, I would say, if they would fire. But unfortunately they haven't. और जिस तरह से ऋषभ पंत आउट हुए हैं outside the off stump, again it is a perennial problem of being able to leave the ball. We are playing at the ball which is on the 3rd or 4th stump again, right? The question is just lift the bat and let the ball go. That is something they need to practice at the nets as well. It's not, if you look at Kohli, it's always going for the ball and trying to hit the ball. Sometimes if the ball, there's a bounce, try to leave the ball as well, just to get into the habit of how to leave the ball outside the stump. That is in itself is a run made, because if you're at the wicket, right, once the bowler is tired, first spell is gone, then you own the match. They're not even getting to that point, right? So that is something I would recommend highly, and I'll just conclude highly, to actually learn how to or practice how to leave the ball, and that will win India the Test match series. राइट, एब्सोल्युटली. और लेवी, मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके इसमें ऐड करूंगा. मैं कुछ ग्राफिक्स और एनालिसिस देख रहा था, उसके अंदर वो ये बता रहे थे कि केएल राहुल जो खेल रहा है अभी फिलहाल और रोहित शर्मा और विराट कोहली जो खेल रहे हैं, उन दोनों में जहां पर उनका बॉल और बैट जहां पर मैच हो रहा है, जो इम्पैक्ट है बॉल और बैट का, वो केएल राहुल का बॉडी के नजदीक है और राहुल और विराट का बॉडी के थोड़े से दूर है. तो इस वजह से वो जो है वो एज लग रहा है उनको और वो पीछे स्लिप में जा रहा है. और राहुल जो है चूंकि वो बॉडी के थोड़ा क्लोज खेल रहे हैं, इसलिए वो इस कंडीशन में, इन सिचुएशंस में थोड़ा अच्छा खेल पा रहे हैं. तो इस वजह से उनको खेलने के लिए थोड़ा समय ज्यादा मिल रहा है. तो ऐसा नहीं कि जैसा हम लोगों ने कई बार क्रिटिसाइज किया, रोहित को भी किया, कोहली को भी क्रिटिसाइज किया, इट डजंट मीन कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है. वो अच्छे प्लेयर हैं, तभी तो वो इतने समय से इंडियन क्रिकेट को सर्व करते आ रहे हैं. बट अभी की जो सिचुएशन है, अभी की जो कंडीशन है, उसके अंदर जो उनको एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं. इस वजह से उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है. तो यस लेवी, ऐड करना चाहता हूँ, वेरी गुड पॉइंट आपने. दैट इज एग्जैक्टली द ऑब्जर्वेशन. जैसे कि केएल राहुल, ही इज वेटिंग टू फॉर द बॉल टू कम टू हिज जोन. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग आफ्टर द बॉल. अगर आपने देखा आज में, उसने जब एक बॉल लेट खेला, it came very close to knocking off the off stump. It was very, very close, right? What he's doing, he's playing within his competencies, right? He knows that if he goes after the ball, जैसे कि रोहित शर्मा
and Kohli have been guilty of, right? Then they will nick it because he has no interest in. He understands. He has just made the adjustment. The problem with Kohli and Rohit are that it is there because they are a class player. They feel, and then again, it is an instinct of these kind of very aggressive, very top class batsmen that when they are struggling, they feel that I need to go and make the runs or go for the ball. At least the Right. instinct of it's a both as a cat has an instinct, like a tiger has an instinct, right? To go for the ball to hit runs. It's a natural instinct that they have to curb it a little bit, and when they leave the ball, right, then what will happen is you will be forcing the bowler to change the line, right, and come a little bit inside because they're leaving the ball, right? Then they will come a bit inside. That's when it will come in your range to play the ball, but you have to wait it out. You give yourself the opportunity of staying at the wicket and have the bowlers. Otherwise, they know it's like a lollipop out on the fourth stump. They know he's doing, and that is exactly what is happening in 4 innings. Right. Absolutely. Right. So I think just right. So just to share, it is going somewhere around 50 minutes. So there are two questions. So we will take those two questions and we'll probably end the session for today. So थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सिद्धार्थ जी आपके क्वेश्चंस के लिए। आपके 2 क्वेश्चंस अभी हमारे पास हैं, उसको लेते हैं, फिर आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं। सो ये सरफराज खान इज just a burden for interest at best at home. इसको अगर अरुण जी मैं ये बताऊं तो सरफराज खान इतना उन्होंने खेला नहीं है for us to be able to make a full fledged judgment. अगर आप सोचोगे तो he's hardly played too much of cricket. For us to make a judgment कि वो फॉरेन ट्रिप में अच्छा खेलेंगे या इंडियन पिच में ही अच्छा खेलेंगे, उनका वक्त आएगा। उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। उन्होंने इतना रन बनाया है कि उन्होंने दरवाजा तोड़ के अपना नाम डाला है अंदर। तो आई वुड से कि आप उनको मौका दें। मे बी एज आई सेड देयर इज अ गुड चांस कि रोहित probably विराट, जडेजा डेफिनेटली लुक्स लाइक these players are on their last leg. हो सकता है कि लाइक सरफराज खान का मौका मिलेगा। मौका मिलने के बाद वो इंग्लैंड जाएं, साउथ अफ्रीका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, खेल के देखें, और अगर उनका वहां पे सक्सेस नहीं आता है तो अरुण जी आपने जो कहा ऑब्वियसली वो बात सही होगी, लेकिन हमें उनको मौका देना चाहिए। थोड़ा और मौका मिलेगा तो हम ये जजमेंट बराबर कर पाएंगे, ये मेरा व्यू है। बाकी आई लिव लेवी और समवन टू आल्सो शेयर। जस्ट अ ब्रीफ वन, थैंक्स, जस्ट अ वेरी ब्रीफ वन। आई एम गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, राइट। अरुण जी ने जो ऑब्जर्वेशन किया है मैं उससे 100% एग्री करता हूं। मैं आपको बताऊंगा क्यों। सरफराज स्किल और बैटिंग है तभी तो अभी इंडियन टीम में आएगा ना। क्रेम डला क्रेम, आप पूरे 1.5 बिलियन में आप 11 में आ रहे हो, मतलब आप में वो टैलेंट है। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नाउ फिटनेस मेरे हिसाब से। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स जो ग्राउंड्स होता है बहुत बड़े होते हैं, 80 मीटर्स होता है। उसमें जब आप बॉल मारते हो आपको पीक लेवल ऑफ फिटनेस होना चाहिए टू रन बिटवीन द विकेट्स। 3 रन्स इज लाइक पानी कम चाय, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। 4 रन्स भी तो आपको यू हैव टू go and you can take at many occasions, especially आप at the at the Melbourne cricket out में देखेंगे, सिडनी में भी देख सकते हैं, more so in Sydney. You need to have that level of fitness that Virat Kohli has exemplified. तो ये with सरफराज़'s fitness, टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिटनेस की बात कर रहा हूं, that he does not have the fitness to play on Australian wickets or English wickets. He needs to work very hard, and that is all this is about, taking Indian cricket higher, and the sooner he adapts to it, the better it is. Indian grounds में छोटे ग्राउंड होते हैं, 60 meters you can get by, ठीक है। So I have to be brutally honest, sorry Sarfaraz ji, but this is only a constructive feedback if you're watching this, but please, I hope that for in sake of Indian cricket to go even higher, please work on your fitness and do the hard yards, and it'll be better for you. एक लास्ट कमेंट हम लोग लेते हैं, ये शायद हम सबके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो शायद सिद्धार्थ जी ने दिया है। तो विद दिस कॉम्प्लीमेंट वी विल एंड आवर टुडे शो। योर चैनल इज मच बेटर देन स्पोर्ट्स तक और एनी अदर चैनल। सो थैंक यू सिद्धार्थ जी, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारी पूरी पैनल के लिए। और आप जैसे व्यूअर्स जो हैं
वही इस डिस्कशन को, इस चैनल को जो है वो सक्सेसफुल बनाते हैं। और आप चूंकि हमारी बातें सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमें मौका मिलता है कि हम आपके व्यूज़ को भी इस शो में इन्वॉल्व करें, आपको इन क्वेश्चंस और कमेंट्स के माध्यम से इन्वॉल्व करें, और कोशिश करें कि आपके आंसर्स भी हम लोग यहाँ पर हैंडल करें। और हम हमारी तरफ से ये एक ऑनेस्ट कोशिश करते हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझ है गेम के ऊपर, और उसके ऊपर हम एक ऑनेस्ट डिस्कशन करें, ना कि किसी बायस्ड माइंडसेट के साथ में डिस्कस करें। तो ये हमारी एक कोशिश होती है। चलिए आज के डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। पैनल को मैं थैंक यू बोलता हूँ, लेवी, अनूप, आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। और फिर थैंक यू मैच टू के दौरान और सिद्धार्थ, मैच के अरुण। पहले हम लोग बात करेंगे जो मेलबोर्न में होगा। इस दौरान भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि बीच में हम लोग टच बेस करें और उन टॉपिक्स को कवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट वन थिंग, सिद्धार्थ, अरुण जी, थैंक यू सो मच। आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आपके सारे व्यूज शोज में बहुत ही अच्छे हैं। Thank you so much for whatever you have told us. It is a great encouragement for all of us. We are all cricket lovers. To have a few other cricket lovers come and share their views and ask questions is wonderful. Thank you so much, Arun Right. and Sidharth. Thank Yes. you so much. Maybe? Thank you very much. Okay. Thank you. I would Thank like to you. thank Arun ji and Sidharth ji for आप जब क्वेश्चंस पूछते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो, तो हम भी फिर उसको आंसर करते हैं, और हमारा भी we get our thinking hats on, and and contribute. So you make the show even more richer than it is. And Rahul ji, thanks for your excellent comparing. Without your kind of guidance, we will not be able to achieve what we have achieved. So thank you. And anyway, Levi, he's the one who got the correct prediction, right? He's Yes. the one who got the draw. Okay. Till now, we are 1-1 and one draw. Now on to the last two. I'm hoping that India will win too. I'm hoping India will win the next two. Absolutely. Fingers crossed. Jai Hind. Okay. Jai Hind. Bye. Okay.